नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट दृश पर, जहां आपको मिलते हैं एग्जाम रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स एग्जाम टिप्स के साथ। और आज है हिस्ट्री सीरीज का पार्ट 6 और आज हम बात करेंगे द दिल्ली सल्तनत के बारे में। इस टॉपिक से रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते रहते हैं एंड इट इज़ वन ऑफ द मेन टॉपिक्स ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि हम इस वीडियो में डालेंगे एग्जाम टिप्स विद द पॉसिबल क्वेश्चंस एज वेल। तो पेन और नोटबुक रेडी रखिए और रेडी हो जाइए सारे पॉइंट्स नोट करने के लिए, क्योंकि हमने डिवाइड किए हैं सारे जो एसेंशियल टॉपिक्स हैं इस टॉपिक के इन सेक्शन वाइज, और हर सेक्शन के बाद आपको मिलेंगे एग्जाम टिप्स एज वेल एज दी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो रेडी रहिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि लास्ट में आपको मिलेगा हिंट फॉर द नेक्स्ट वीडियो टॉपिक एंड ऑल्सो बुक रिकमेंडेशंस विल बी गिवन फ्रॉम माय साइड। ऐसे ही एग्जाम रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, ताकि हम ला सकें आपके लिए ऐसे ही एग्जाम रिलेटेड स्टडी मटेरियल ऑन रेगुलर बेसिस। तो सेक्शन 1 में जानते हैं फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुआ था 1206 AD में, जब मोहम्मद घोरी के एक स्लेव जिसके नाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना खुद एक डायनेस्टी एस्टैब्लिश किया था। इस डायनेस्टी का नाम था स्लेव डायनेस्टी और मामलुक डायनेस्टी, जो एस्टैब्लिश किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक से। ऐबक was also known for starting the construction of the Qutub Minar and he also constructed the Quwat ul Islam Mosque. And he was also named as Luck Baksh. So it is his another name and it was given to him for his generosity. Iltutmish, जो recognized होते हैं as the Caliph of Baghdad के जैसे, and he introduced the इक्ता system और उन्होंने दिल्ली को consolidate किया as a capital. And इनके ही पीरियड में monetary reforms भी आए, जैसे कि copper and silver coins usage. फिर आते हैं रजिया सुल्तान, who was the first and the only woman ruler of the Delhi Sultanate. She had faced opposition due to her gender and she died in the battlefield. फिर आते हैं घियासुद्दीन बलबान, who introduced the palabos, that is Persian court timing system, और इन्होंने अपना मोनार्की स्ट्रेंथन भी किया आयरन एंड ब्लड पॉलिसी से। तो इस सेक्शन से आप फोकस करें द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जिसमें इक्ता सिस्टम, कोर्ट कल्चर एज वेल एज मॉनिटरी रिफॉर्म्स विच इंट्रोड्यूस बाय बलबान। इन सारे सेक्शंस में आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से ही मेजर क्वेश्चंस आते हैं। इस सेक्शन से जो क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो होंगे, व्हाट इज द इक्ता सिस्टम, अंडर विच रेन इट केम इनटू फोर्स, हु इंट्रोड्यूस द मॉनिटरी रिफॉर्म्स, हु वाज द वन हु इंट्रोड्यूस द स्लेव डायनेस्टी, हु वाज द वन who introduced the Palabos system and what is the meaning of the Palabos court system and it belongs to which country. So these are the type of questions that you can expect, and also who was the first female ruler of the Delhi Sultanate and what was the other name of Qutbuddin Aibak, who was called the Luck Baksh. These are all sum up questions. तो अब सेक्शन 2 में जानते हैं द खिलजी डायनेस्टी के बारे में। जलालुद्दीन खिलजी फाउंडेड द खिलजी डायनेस्टी इन 1290 AD, बट इट वाज हिज नेफ्यू जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने इस डायनेस्टी को और पावरफुल बनाया। इनके टेरिटोरियल एक्सपेंशंस भी अच्छे थे एंड इन्होंने मंगोल्स को डिफीट किया मल्टीपल टाइम्स। साउथ इंडिया में भी इन्वेड किया एंड दे रूटेड टेम्पल्स लाइक देवागिरी एंड रत्नागिरी। मॉनिटरी रिफॉर्म्स में जैसे इन्होंने चेंज आया बाय कंट्रोलिंग द प्राइस fixation, introduced market reforms as well. Alauddin Khilji also had a strong impact in its military reforms as well, introduced Chehra and Dagh, such kinds of reforms, and his administration policy was also very unique and it helped the Khilji dynasty to move forward. इस section से जो आप question expect कर सकते हो होगी, who introduced the Chehra system, what was the administrative reforms of the Alauddin Khilji, and what were the other military reforms such as the Chehra and Dagh, what are their meanings, who introduced that, and these are all the some type of questions you can expect. And who was the one who made more powerful the Khilji dynasty, who was before that. So these are all the summed up questions that you can expect from this section. So now in section 3, let's know about the Tughlaq dynasty, which was founded in 1320 by Ghiyasuddin Tughlaq. This dynasty was famous for its achievements, but it was also criticized for its controversial rulers, which includes Muhammad bin Tughlaq as well. Muhammad bin Tughlaq के reign में capital shift किया गया था from Delhi to Daulatabad. Also helped them to control the Deccan better. The shift of the capital didn't work क्योंकि वहाँ पे harsh conditions और logistics के वजह से ये जो capital shift था ये एक failure हो गया.
Under his reign, they introduced copper coins with same value as the silver coins. No standardization which led to forgery, और इसी टाइम में बहुत इकोनॉमिक फेलियर्स बढ़ने लगी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वे नॉट वर्किंग एंड इट लेड टू एन इकोनॉमिकल डिजास्टर. हेवी टैक्सेस लेने स्टार्ट हो गए थे दो अब रीजन से, दैट इज गंगा जमुना रिवर साइड, एंड इसके वजह से देयर वाज अ लार्ज revolts among the peasants against him. Despite his administrative, taxation and financial failure, he had a good, strong in knowledge regarding the logistics as well as mathematics and architecture. हम जानते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में, जिन लोगों का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था मद्रासास, कैनल्स एंड अदर सच, focused on cities like फिरोजाबाद एंड हिसार. They translated Sanskrit works into Persian और इन्होंने slave welfare भी promote किया. The questions that you can expect from this section are: who was the founder of the Tughlaq dynasty, and after Muhammad bin Tughlaq, who took the legacy forward, and then what were the cities' names which were formed under Firoz Shah Tughlaq, what was his contributions towards canals, and also under whose reign there was an economic failure and there was taxation policy failure. And these are some of the questions that you can expect, and also note down the administrative failure, taxation failures of Muhammad bin Tughlaq as well as the achievements of Firoz Shah Tughlaq. Section 4 में जानते हैं सैयद एंड लोधी डायनेस्टी के बारे में. यह डायनेस्टी वाज नॉट अमॉन्ग द फेमस डायनेस्टीज एंड ये ज़्यादातर ही लोकल नोबल्स के ऊपर डिपेंडेंट था, एंड इट हैड नो लेगेसी एंड नो सच पावरफुल रेन. लोधी डायनेस्टी वाज फॉर्म्ड बाय एन अफगान, दैट इज बहलोल लोधी. और इस रेन में सिकंदर लोधी वॉज द मोस्ट कॉम्पिटेंट, जिन्होंने आगरा भी बनाया, एंड ही ऑल्सो contributed towards building the architectures as a centralized policy. The last sultan was Ibrahim Lodhi, who was an autocratic and was not a popular one. Then in 1526, Babur defeated Ibrahim Lodhi, first battle of Panipat में. इसी से दिल्ली सल्तनत का एंड हुआ and it led to the beginning of the Mughal Empire. इस सेक्शन से जो आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते होंगे: who founded the Lodhi dynasty, and then who founded the Sayyid dynasty, who defeated the Lodhi dynasty, who was the ruler, in which battle did they defeat, in which timeline, and which were the cities that were transformed by a Lodhi ruler, who was he, and what was the battle's name that was fought to end the rule of the Lodhi dynasty and mark the beginning of the Mughal dynasty, who defeated whom. These are the questions that you can expect from this section. So a book that I can recommend from my side is the Medieval History by Satish Chandra, which you can refer to get more details regarding this topic, that is the Delhi Sultanate, and you'll find more such minute details. If you're looking for such note type of content, then you can find in this book, so go and refer that and make notes out of it. And one example that I can give you from my site will be: make a timeline of all the rulers of the Delhi Sultanate in Khalji dynasty, Lodhi dynasty, Sayyid dynasty, Tughlaq dynasty. Make a timeline of all the dynasties according to the years, and then it will make you the notes more easier and you can topple up all the points in a better way. तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, द दिल्ली सल्तनत. आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द पॉइंट्स, सारे रूलर्स, उनके अचीवमेंट्स, उनके और एक सेकंड नेम्स इज मेंशन्ड एंड ऑल द सिटीज़ दे यूज्ड टू रूल और दे हैव डेवलप्ड. फिर कुछ वॉर्स के बारे में भी मेंशन्ड है विद द टाइमलाइंस एंड ऑल्सो द मेन रूलर्स नेम. तो जाइए उनके नोट्स बनाइए, एंड इफ़ यू हैव एनी query then you can comment down our comment box section and I'll try to answer them asap. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक. तब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आ सके ऐसे ही कंटेंट्स के साथ एग्जाम रिलेटेड विच विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशंस. तो तब तक फोकस रहे और गवर्नमेंट दृष्टि के साथ ग्रो करें. मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें.